Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new topic, requirements engineering. So it is a very important part of software development life cycle. In fact, it is the very first step. Whenever you start a project, you actually first of all starts gathering the requirements from the customer. So the process of establishing the services that a customer requires, what you want to know the requirements of the customer. What does the customer want from the system, and the constraints, the limitations, the conditions under which your software is going to operate and is developed, the environment in which it is run. So the system requirements are the description of the system services. ना सिर्फ ये कि आपने एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है, यू ऑल्सो विल बी गैदरिंग दी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. what are the services running on your system, the constraints imposed on them, the environment in which your system will be running. So these are the system requirements that you will gather. So a basic question that arises, what is a requirement? It may be ranging from a very high level, a short abstract statement of a service or of a system constraint, or it could be a mathematical functional specification. So a requirement may serve different function. Requirement जो है उसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं. आप जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, कस्टमर के साथ निगोशिएट करेंगे, वो रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर निगोशिएट करेंगे, उसकी बेस के ऊपर आप बिड कर सकते हैं. और डेट कुड बी द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ. एंड इसके अलावा जो है रिक्वायरमेंट्स की बेस पर ही जो है आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वैलिडेट होगी कि क्या वो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही है जो कि इनिशियली आपने सेट आउट की है.